इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहला हम लोगों ने जानना है कि दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट इज द एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज a, कोफिशिएंट ऑफ x, that is the b, and c is the constant term. So there is a relation between the zeros and the coefficient of the polynomial. So we suppose let alpha and beta are the two zeros of the polynomial. We have supposes here that alpha and beta are the two zeros of the polynomial. So alpha plus beta equal to means alpha plus beta means sum of the zeros is equal to minus b by a. Here minus b is the coefficient of x and a is the coefficient of x square. So we can write here alpha plus beta is equal to the coefficient of x by the coefficient of x square. Okay, so you all have to learn it. Means alpha plus beta equal to minus b by a. Minus a, b means the coefficient of x and a means the coefficient of x square. And the next one is the product of the zeros, that is the alpha beta. Product of zeros means that is the alpha beta, and it is equal to the c by a. Means c means this is the constant term c and a is the coefficient of x square. So we can write here the constant terms are by the coefficient of x square. Okay, so this relation alpha plus beta and alpha beta, we have to learn it, and we will use it in the verification of the relation between the zeros and coefficient of the polynomials. Let's take an example of 2x square minus 8x plus 6. We have to verify the relation between the zeros and the coefficient of the quadratic polynomial. Now we have to factorize the 2x square minus 8x plus 6. So first of all, we know that in the class 9th or the 8th we have learned about the middle term splitting of the quadratic polynomial. So here first of all we have to multiply the 2x with the 6, means the coefficient of x square and the constant term. And now factorize this 12, we get 2 into 2 into 3. Okay, we factorize the 12, we get 2 into 2 into 3. Now we have to arrange the factors in such a way that we get the minus 8. Means if we get the sum or the difference in such a way that we get the minus 8. Okay, now so I think 6x plus 2x means 8x होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं minus 8x equal to minus 6x plus minus 2x. Okay, now take a common between 2x square and 6x, means we have taken a 2x and we get the x minus 3. Again in this term we have taken minus 2 as a common, we get the x and minus 3. Now here x minus 3 is a common in the both, so we have taken x minus 3 as a common, and now here remaining 2x minus 2. If we equate the x minus 3, then we get the x equal to 3, and 2x minus 2 equal to 0, it means x equal to 1. So this is the zeros of the polynomial 2x square minus 8x plus 6. Now we have to get a relation between the coefficient and the zeros. So first of all we have find the sum of zeros. तो सम ऑफ जीरोज यहाँ पे निकालते हैं तो क्या आता है हमारा 3 plus 1 means 4, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आता है हमारा 3 into 1 equal to 3. Okay, now alpha plus beta we have learned that alpha plus beta equal to minus b by a. Minus b means
you can see here, this is the b. Okay, this is the b, means minus b means क्या करना होगा, माइनस इंटू -8/2, minus into -8/2 we get a 4, and the alpha beta, that is the product of the zeros, that is the c by a, we get a 3. So we have calculated the sum of the zeros, that is the 4, and the product of zeros, that is the 3. Okay, and we have get also the coefficient sum of the zeros equal to coefficient of x square by coefficient of x by coefficient of x square, and the product is the constant term by the coefficient of x square. So this is the relation between the zeros and the coefficient. So this is the verified, means minus b by a equal to also 4, and sum of zeros is also 4. Alpha beta means c by a equal to 3, and the product of zeros is also 3. Next one is, if you have a given sum of zeros and the product of zeros, if it is given the sum of zeros and the product of zeros, then we have to find the polynomial, means how we get the polynomials. So there is a formula, that is the x square minus alpha plus beta x plus alpha beta. This is the formula to form the polynomials. Okay, now let alpha plus beta, that is the 4, and alpha beta equal 3. So what will happen when we put the sum of zeros and the product of zeros in this equation, in this formula, we get x square, अल्फा प्लस बीटा के जगह पर मैंने क्या डाला, 4 डाला, तो क्या आ गया मेरा 4x, और अल्फा बीटा के जगह पर मैंने 3 डाला, तो ये मेरा जो बना, जो ये क्या बना, ये हमारा पॉलिनोमियल बन गया. सो इस तरह क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं. कभी कभी क्या देंगे कि जीरोज दे देंगे, मीन्स अल्फ़ा दे देंगे, बीटा दे देंगे, और फिर उसका बोलेंगे कि उसका वो बनाइए, मतलब पॉलिनोमियल निकालिए. तो हम लोग उसको भी कर सकते हैं. सम ऑफ जीरोज पहले निकाल लेंगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेंगे, फिर उसको कर लेंगे. अगर सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर ऑलरेडी दे रखा है तो भी हम लोग फॉर्मुलेट कर सकते हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज फॉर द क्यूबिक पोलिनोमियल. फॉर क्यूबिक पोलिनोमियल, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल, that is the ax cube plus bx square plus cx plus d. Now there is also a relation between the zeros and the coefficient of the polynomial. So first of all, sum of zeros means alpha plus beta plus gamma. Gamma is the third zeros. In the quadratic equation, you know, there is a 2 zeros because of the degree 2, and in the cubic polynomial there is a 3 zeros because of the degree 3. किसी पोलिनोमियल में जितने डिग्री होते हैं उतना उसका जीरो हो जाता है. तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, मीन्स यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड हियर द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द टू जीरोज. तो दो जीरोज का प्रोडक्ट करके उसका सम निकालेंगे, तो क्या आएंगे, कांस्टेंट बाई एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. एंड लास्ट वन इज द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज, सॉरी यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दिया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, सॉरी एक्स क्यूब, यहाँ भी एक्स क्यूब होंगे. एंड यहाँ पे हम लोग क्या देखा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो कितना आता है, डी बाई ए आता है. डी क्या हो गया आपका, कांस्टेंट टर्म हो गया. सी क्या हो गया, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो गया. बी क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया. ए क्या हो गया, तो कोफिशिएंट ऑफ क्यूब हो गया. ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आया होगा. वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियोज फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज. ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.